Hello students, hope you are studying well at your home. In the previous video, we discussed about the structure of the cell and the then structure and functioning of plasma membrane. Now let's take the next or most important of the organelle of the cell, that is the cell wall. In the case of some organelles, one more outer covering is present. When we talked about the plasma membrane, I told you that plasma membrane is outermost covering of the cell, but there are some exceptions are also. Let's see what are these exceptions. Second organelle, that is the cell wall. Cell wall are present as outermost covering of the cells in the case of some organisms like plants, bacteria, and fungi, etc. These are the some organism in which plasma membrane is not outermost covering. Like हमने कहा था plasma membrane एक outermost covering होती है जो सेल को कवर करती है. बट ये कुछ ऐसे organisms हैं like plants हो गए, बैक्टीरिया हो गया, fungi हो गए, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवर प्रेजेंट रहता है, एक और लेयर प्रेजेंट रहती है. दैट लेयर इज सेल वॉल. सेल वॉल इज हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल जो होती है वो एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये बना है सेलुलोज से. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बाय विच सेल वॉल इज फॉर्म्ड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से, बट जो सेल वॉल है इट इज फॉर्म्ड बाय द cellulose in the case of plants. All these have different cell wall composition, but we are taking just example of plants. In the case of fungi, it is made up of chitin, that is another substance, that is another carbohydrate substance. Like cellulose is most important substance by which the cell wall is formed. Cell wall provide rigidity and due to which they have a fixed shape. लाइक अमीबा के केस में हमने देखा था उसकी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज कर सकता है. बट जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रोवाइड देम रिजिडिटी एंड इट्स अ टफ स्ट्रक्चर. इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट. आउटर जो एनवायरमेंट होगा उससे प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है सेल वॉल. अब देखिए लाइक इन प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी. व्हेन वी कैप द सेल into the hypotonic solution, isotonic solution or hypertonic solution. When we cap the cell in such type of solution, then we see changes in the cell shape. हम सेल की शेप के अंदर चेंजेस देखते हैं. अब क्या होता है, हम एक बार फिर से इनके बारे में बात करते हैं. When we cap the cell in the hypotonic solution, जब हमने सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, सपोज यहाँ पे हमने एक बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म किया है. हमने एक ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म किया है जहां पे वाटर कंसंट्रेशन जो है बाहर बहुत हाई है एंड इनसाइड द कंसंट्रेशन वाटर कंसंट्रेशन इज वेरी लो. अगर बाहर से बहुत हाई अमाउंट में वाटर सेल के अंदर एंटर करता है, then this water when enter inside the cell, it forms pressure on the membrane or wall of the cell. अंदर जाने के बाद ये जो वाटर कंटेंट है, वाटर है, ये सेल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. ड्यू टू द एंट्री ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल एंड द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, सेल कैन बर्स्ट. सेल बर्स्ट कर सकती है, यानी कि सेल फट सकती है. अब इस चीज से प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम सच काइंड ऑफ कंडीशंस, द सेल वॉल इज प्रेजेंट. सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, इट प्रोटेक्ट्स इट. It's apply equal amount of pressure that is exerted by this water molecules. बाहर से water molecules अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद वो सेल के ऊपर एक अंदर से प्रेशर लगा रहे हैं जिसकी वजह से सेल के बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं. पर उस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल अप्लाइज इक्वल प्रेशर टुवर्ड्स द इनसाइड. अंदर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड इट रिमेन्स द सेल इनटू द फिक्स्ड शेप. और सेल को एक फिक्स शेप के अंदर रखती है, सेल की प्रोटेक्शन करती है. दिस इज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. नेक्स्ट वी हैव सीन इन द केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. व्हेन वी कैप द सेल इनसाइड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वी हैव सीन दैट सेल गेट श्रिंक. द वाटर comes out from the cell and cell get shrink. सेल के अंदर श्रिंकेज हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाती है. बट व्हेन द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, सेल बहुत हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है एंड वाटर कंसंट्रेशन इज मच हायर, देन वाटर विल कम आउटसाइड. बट जब बहुत हाई अमाउंट में वाटर सेल से बाहर आने लगता है, देन सेल लूज ऑल इट्स
all its content. When water comes out the cell, then it loses all its contents except the cell wall. यहाँ पे क्या होता है कि लाइक हमने अगर हम सेल ड्रॉ करते हैं विद सेल वॉल, आपने सेल वॉल के साथ सेल ड्रॉ किया, देन सेल लूज ऑल इट्स कंटेंट. ये सब वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर आ रहा है, पूरा वाटर बाहर आ रहा है, तो ये जो इंटरनल चीजें हैं, जो सेल का जो इंटरनल साइटोप्लाज्म है, इट्स ऑल गेट श्रिंक एंड इट कम्स एट वन एंड. वो एक एंड पे आ जाएगा, एक कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है. दैट कंडीशन इज नॉन एज प्लाज्मोलिसिस. दैट कंडीशन इज नॉन एज प्लाज्मोलिसिस. एंड दिस plasmolysis is the movement of water except means all the water, all the contents of the cells comes out of the cell when it caps into the hypertonic solution. This cell is known as plasmolyzed cell. This condition can be reversed back. हम इस condition को फिर से reverse कर सकते हैं. In the case of hypertonic solution, we see the plasmolysis. When we cap the cells in the hypertonic solution, जब हम इस तरीके की plasmolyzed cell को एक hypertonic solution के अंदर रखेंगे, then it regain the water again move inside the cell and it will come its normal position. It will swell up. ये फिर से swell up करेगी और ये अपनी normal condition के अंदर आ जाएगी. So this is about the cell wall which makes the outermost covering in the case of bacteria, plants and fungi, and protect the cell from external environment. And it is made up of cellulose, and it's the dead part of the cell. It's not the living part of the cells, it's a dead part of the cells. So this is about the cell wall. Next we will discuss about the next component of the cell, that is nucleus. Now we have seen that inside the cell membrane, first cell wall, then next layer is the cell membrane. Inside the cell wall, cell membrane, all the organelles are present in a liquid or jelly-like substance that is known as cytoplasm. इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स एक लिक्विड के अंदर फ्लोट करते हैं. दैट लिक्विड और जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. इन साइटोप्लाज्म वी कैन सी द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स. नाउ वी विल डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल, दैट इज न्यूक्लियस. We will discuss the most important organelle, that is nucleus. Let's take the third important organelle, nucleus. Nucleus is important part because it's control all the functioning of the cell. In the case of plant cell, nucleus is present at one side due to the large size vacuoles. ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है. प्लांट सेल्स के अंदर vacuole का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है. But in the case of animal cells, nucleus are present in the center of the cell and it control all the functioning. Nucleus, जो कि आप चीज देख सकते हैं कि आपने अगर 8th क्लास में अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा when we take out the onion peel cells and then stain it, हम उसे स्टेन करते हैं. You can use iodine solution or you can use safranin or methylene blue. कोई भी स्टेन आप जब यूज करते हैं, then you have seen that in the center of the cell we saw a stained part or a dark colored structure. That dark colored structure which take the stain and it's visible by the microscope, it's nucleus. वो stained part या brightly colored जो आपको दिखाई दे रहा है colored part, that is nucleus. nucleus जो होता है ये कुछ important component से बना हुआ है. What are the important component of the nucleus? Let's see. सब किन किन चीजों से मिलकर बना है nucleus. Nucleus has outermost covering. न्यूक्लियस की एक बाहर कवर प्रेजेंट रहता है, लेयर प्रेजेंट रहता है, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द आउटरमोस्ट कवर ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेकंड थिंग, इनसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस also filled with a jelly like substance or a liquid, that is nucleoplasm. That is nucleoplasm that present inside the nuclear membrane. Third thing that is here, that it contains a small rounded structure, that is nucleolus. And fourth important component of the nucleus is the chromatin or chromosomes. Chromatids, these are the thread like structure. We will discuss all about one by one. Let's take the nuclear membrane. Nuclear membrane is the membrane or cover which covers the nucleus or internal part of the nucleus. This is the cover of the nucleus.
The nuclear membrane is two-layered structure. It has two layers, inner layer and outer layer. Nucleus has two-layered structure. अगर हम nucleus की structure यहाँ पे अलग से draw करें simple way में, then you can see it's a two membrane structure. One is outer membrane and another one is inner membrane. देखिए इस तरीके से यह है nuclear membrane. This is the outer membrane and this one is inner membrane. So nuclear membrane is double membranous structure. It has two layers, inner membrane and outer membrane. You can see inner membrane is continuous and in between this we have left some gaps also. यहाँ पे हमने बीच में कुछ gap छोड़ा है because it's not continuous layer. These gaps are known as nuclear pore. These are known as nuclear pore. Nuclear pore क्यों होते हैं? Nuclear pore वो पोर एक तरीके से पोर या गेट लाइक स्ट्रक्चर है जो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगा. ये वो रास्ता है, वो पाथ है जहां से न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी या बाहर से कोई चीज अंदर आएगी. बाहर कहाँ? यानी कि साइटोप्लाज्म में. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियस से कोई भी चीज साइटोप्लाज्म में जाना है, ये साइटोप्लाज्म से वापस न्यूक्लियस में आना है. इस चीज की एंट्री और एग्जिट जो होगी वो किसके थ्रू होगी? इट विल हैपन बाय द न्यूक्लियर पोर व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेकंड पार्ट दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर सारा एक लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. लाइक साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. Here inside the nuclear membrane also a liquid present, that is nucleoplasm. Inside the nucleoplasm we can see one round structure that is known as nucleolus. This nucleolus is also very important structure which helps in the synthesis of RNA and RNA etc. We will study about it later. It's not part of your syllabus. You will study about it in your higher classes. This is the nucleolus and it's important structure also. Next, fourth part is the chromatin. Inside the nuclear membrane, which have seen, we can see some thin thread-like structure. These thin thread-like structures are known as chromatins. These thin thread-like structures known as chromatin. Chromatins, chrom means color, T means thread. The threads which take the color when we stain the cell, then it's known as chromatin. When we see the cell through the microscope, जब हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कलर्स फॉर्म में नजर आती है. इस वजह से इसी कलर की वजह से इनका नाम क्रोमेटीन रखा गया. क्रोमो मीन्स कलर एंड टीन थ्रेड्स. So these are the color thread like structure. These thread like structures they are known as chromatin. इन्हें हम क्रोमेटीन बोलते हैं कब? जब सेल्स इज इन रेस्टिंग फेज, जब सेल अपना डिवीजन नहीं कर रहा. आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल होती हैं, these cells are continuously dividing, present in continuously dividing stage. हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो है कंटिन्यूसली डिवीजन करती रहती हैं. लाइक एक सेल जो है वो डिवाइड होके टू सेल्स फॉर्म करेंगी एंड लेटर ऑन these two cells will form two more cells. This is known as cell division. इस तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं cell division. All the cells continuously divide, but what happens when the cells is not dividing? जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है उस टाइम पे ये हमें थिन थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है जो दिखाई देती है. बट व्हेन सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग और वी कैन से एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन these thread like structures get condense. ये जो thread like structure होती है ये कंडेंस हो जाती हैं और कंडेंस होके ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं. एट दैट टाइम वी कॉल देम chromosome. They get condensed and they form a structure that is known as chromosome. So during cell division these chromosomes get condensed and they form a structure that is chromosomes. Chromosomes are present in our nucleus and we have 23 pairs of chromosomes. Total we can say we have 46 chromosomes. ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 23 pairs chromosomes present रहते हैं. और अगर हम टोटल नंबर की बात करते हैं तो टोटल वी हैव 46 chromosomes in one cell. This is the number of chromosomes in the human cells. These chromosomes are formed from the DNA. ये जो chromosomes हैं ये किससे फॉर्म हुए हैं?
ये क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए हैं डीएनए से. डीएनए विच इज the full form of DNA. Chromosomes are formed from DNA, and DNA is deoxyribonucleic acid. This is deoxy, means we can say it's deoxyribonucleic acid. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. This deoxyribonucleic acid has some important functional unit, that is genes. इसके ऊपर कुछ functional unit present होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं genes, and these genes are the hereditary material of our cell which carries character from parents to their offsprings. यही जो genes होते हैं यही ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, यानी उनके बेबीज के अंदर, बाय विच दे कैरी कैरेक्टर्स. यानी जो पेरेंट्स की सिमिलैरिटीज बच्चों के अंदर नजर आती है वो किन की वजह से होती है? वो होती है इन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट जीन्स की वजह से. यही जो जीन्स है यही जीन्स कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. So that's all we studied about the nucleus. Nucleus has three important components: nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus, and chromatin. Chromatins are at the time of when cells are not in dividing states. When cells has to be divided, जब cell का division का time आता है, at that time these chromatins condensed and form chromosomes. And these chromosomes are formed from DNA, that is deoxyribonucleic acid, which is the main hereditary material which contain genes which transport the character from parents to their offspring. The structure we studied here about the nucleus is the nucleus which is present in the eukaryotic cell. जो हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस की है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर एंड न्यूक्लियोलस सभी चीजें प्रेजेंट है. इस तरीके की न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर. We will discuss about one more type of the cell in which the nucleus is not well defined. यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. Only nucleus is present in a unwell organized form or in the form of nucleoid. Such type of cells are known as prokaryotic cells. In the next videos, we will discuss about the structure of prokaryotic cells and some another organelles of the cell. So keep watching and keep studying.